এবাৰ সংসদত কোনো ৰেলৱে বিভাগৰ বিৰুদ্ধে নহয়, এবাৰ খুদ বিজেপিৰ এগৰাকী মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হ'ল সংসদৰ মজিয়াত সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী। কালিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সংসদৰ মজিয়াত অসমৰ ৰেল ব্যৱস্থাৰ দুৰ্বল যি আন্তঃগাঁথনি, সেই দুৰ্বল আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ সংসদৰ মজিয়াত উদঙাই দিছিল অগপৰ সাংসদগৰাকীয়ে। অগপৰ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে অসমৰ ৰেল ব্যৱস্থাৰ সমান্তৰালকৈ আজি অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সন্দৰ্ভত যি প্ৰকৃত স্বৰূপ উদঙাই দিলে সেয়া কোনো সাহস গোটাব পৰা নাছিল। আজি সেইগৰাকী সাংসদে অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সমস্যা অৰ্থাৎ অসমৰ মূল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ গুৱাহাটীৰ পৰা যি ডিব্ৰুগড় সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, নুমলীগড়ৰ পৰা যি যোৰহাট সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ কৰি থকা অৱস্থাত আছিলে, সেই ঘাইপথক লৈ সৰব হৈ উঠিল সংসদত আৰু বিজেপিৰ মন্ত্ৰীৰ প্ৰতিচ্ছবি উদঙাই দিলে সাংসদগৰাকী। এই মুহূৰ্তত জনাই ল'ব বিচাৰিছো সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। সংসদৰ মজিয়াত পুনৰ সৰব হৈ উঠিল সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী। ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে এবাৰ খুদ মন্ত্ৰীকে সমালোচনা কৰিলে, মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল। কাৰণ অসমত 2017-18 বৰ্ষতে বা 16 বৰ্ষতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ বাবে যি আবণ্টন দিয়া হৈছিল আৰু লেহেমীয়া গতিত বৰ্তমানলৈকে চলি থকা নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বাবে যি হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাইজে, তাৰ বাবে এতিয়া চৰকাৰৰ যি ব্যৱস্থাপনা, সেই ব্যৱস্থাপনাক সমালোচনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী। ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে সংসদৰ মজিয়াত বাৰে বাৰে অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, বিশেষকৈ নুমলীগড়ৰ পৰা যি যোৰহাট সংযোগী, লগতে যোৰহাটৰ পৰা ডিব্ৰুগড় সংযোগী যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, সেই ঘাইপথৰ কথাক লৈ সৰব হৈ উঠিল সংসদত আৰু তেওঁ কেইবাটাও বিষয়ৰ সন্দৰ্ভত মাত মাতিলে। কালিৰ দিনটোত অসমৰ পৰা যিসমূহ বহিৰাজ্যলৈ ট্ৰেইন বা ৰেল চলাচল কৰে, লগতে বিদ্যুৎ সেৱাৰ জৰিয়তে বা বিদ্যুৎ চালিত যি ট্ৰেইন, সেই ব্যৱস্থাপনা কিয় হোৱা নাই অসমত, এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলে। আজি পুনৰ উত্থাপন কৰিছে যে অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, মূল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ সমস্যা সমাধান কেতিয়া হ'ব, নিৰ্মাণৰ বাবে সকলো দায়িত্ব দিয়াৰ পাছতো কিয় নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ নহ'ল, তাক লৈ এতিয়া সৰব হৈ উঠিল সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী। সংসদৰ মাজত কি মন্তব্য কৰিছিলে, সেই মন্তব্য শুনো আহক। Honorable Speaker Sir, I am concerned about only one road, that is Numoligarh-Dibrugarh road. Sir, this Numoligarh-Dibrugarh road, that is Numoligarh-Jorhat section, Jorhat-Jhaji section, Jorhat-Dimou section, Dimou-Moran section and Moran-Dibrugarh section. Actually, sir, it was awarded to contractors in 2015-16 and 2016-17. But yet, these four stretches, that is Jorhat-Jhaji, Jhaji-Dimou, Dimou-Moran, Moran-Dibrugarh, these four sections works not yet completed. Actually, if we go through the details, then we'll find that the main reason behind it is NHIDCL. So, when this work will be completed, and if the NHIDCL field workers, field officers are responsible for this delaying, will the minister take action against them? माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि माननीय सदस्य जी का अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में प्रश्न पूछा गया है, बरपेटा क्षेत्र के अंतर्गत आपके क्षेत्र में 5 परियोजनाएं जो कि 1404 करोड़ की परियोजनाएं पूर्ण हो गई हैं, जो 98 किलोमीटर की हैं। 7 परियोजनाओं में काम चल रहा है, 71 किलोमीटर की हैं, 4204 किलोमीटर है। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आपके द्वारा पूछा गया है जो कि डिब्रूगढ़ जोरहाट से संबंधित है, जो कि 194 किलोमीटर का है, 6100 करोड़ का ये योजना है।
लगभग 112 किलोमीटर की जिस योजना का आप जिक्र कर रहे हैं, और उस योजना में आपके द्वारा बताया गया है कि काम में कमी है, काम में कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, चूँकि और इसमें आपने लेट होना भी बताया है। और इसमें मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ कि लेट होने के कारण, चूँकि जब किसी रोड के चयन की प्रक्रिया के साथ भूमि अधिग्रहण से संबंधित होती है, वैधानिक मंजूरी में भी थोड़ा समय लगता है, और उपयोगी सुविधाओं को जोड़ने में भी उसमें समस्या आती है, और ठेकेदार के द्वारा भी सारी व्यवस्थाओं को जुटाना पड़ता है। मैं माननीय सदस्य जी के द्वारा बताता हूं कि अगर इसमें आपको कुछ और विशेष और आपको लगता है कि इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे मंत्रालय के द्वारा उसमें लगातार निगरानी की जा रही है, देखा जा रहा है, कार्य को समय से पूरा करने जो आगे समय दिया है उसको पूर्ण करेंगे। सप्लीमेंट्री। Sir, Honorable Speaker, sir, is there any proposal for conversion of Baihata Sariali to Mission Sariali Tezpur, NS 15 to 4 lane? ऑनरेबल मंत्री जी। चूँकि मैंने माननीय सदस्य जी की जानकारी में लगभग उनके क्षेत्र में चलने वाली योजनाओं को उनको पत्र में दिया भी गया है, और ऐसा कोई प्रस्ताव, चूँकि एक विशेष रूट का उन्होंने जिक्र किया है कि इसको परिवर्तन करने का है, इस प्रकार से मेरे पास, हमारे मंत्रालय के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। अगर वो प्रस्ताव देंगे उस पर विचार करेंगे, अगर करना होगा तो मंत्रालय उस पर विचार करेंगे। डीपीआर भी उसमें एक, इनके प्रश्न के आधार पर जो आपने कहा है कि उसको प्रस्ताव को चेंज करने का, उसकी डीपीआर भी विभाग मंत्रालय के द्वारा कार्रवाई पे है, गतिमान है। भजनलाल जाटव। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 আৰু 7099017110 নম্বৰত।